Hello friends, welcome at GS Score. I am Manoj Jha and today we are going to discuss Odisha PCS this year paper. This is what we are continuing for the last few days. All the papers has been discussed and we are giving you the approach paper also so that you have some reference for further preparation. Today I am going to discuss paper 4, that is ethics, integrity and aptitude. This was the you can say the first year when the new scheme of things was introduced. ये पहला साल है जब नए फॉर्मेट में एग्ज़ाम हो रहा है. What I can say about this paper 4 is that this year you will see that this paper will decide everything. This paper and essay. Why? If you look at paper 4, paper 4 is highly conceptual, number one, and application oriented. Though you people have a reference of UPSC's previous question paper, but generally what happens, whenever a student used to prepare for PCS or for this paper, generally they go for you can say the keywords. That's it. Some keywords, some examples. This is how they prepare. Generally इसी तरीके से सभी के सभी अपनी प्रिपरेशन करते हैं. लेकिन अगर इस पेपर को आप देखें तो ये पेपर बहुत ही अप्लाइड है. 50% of the questions are highly conceptual and applied also. And I can say at least safely I can say 50% of the questions are not less standard of than UPSC. वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के बराबर ही है. मैं इसलिए ये वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जनरली एक नोशन है सभी लोगों में, स्टूडेंट्स में, दैट पीसीएस इज यू कैन से ईजियर. they are used to ask regional questions, very straightforward question, fact oriented questions. It's not like that. Now coming back to the point, why I am saying that this year these two papers will decide everything. If you compare paper 1, 2, 3, these questions are, or you can say the questions of paper 1, 2, 3 is generally you will find that very straightforward, more information driven. So most of the people will write, most of the people will attempt. So information ड्रिवन जब भी क्वेश्चन होगा तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सबके पास इंफॉर्मेशन है. वहाँ फाइट करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि सबके पास है और सेम इंफॉर्मेशन है. तो जब इंफॉर्मेशन ड्रिवन होगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे उड़ीसा पीसीएस का हो, और वट एवर इट इज, तो उसमें वेरिएशन ऑफ मार्क्स कम होते हैं, जनरली कम होते हैं. जब भी ओपिनियटेड पेपर होगा, जब भी काफ़ी एनालिटिकल पेपर होगा, तो उसमें वेरिएशन के चांसेस, और ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे तो उसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप एसे को देखो तो इससे जो इस बार पूछा गया है ज़्यादातर उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस बेस्ड ही है, करंट अफेयर्स बेस्ड हैं. और what is my apprehension is most of the students will do a complete, you can say the information driven writing. तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होगा, सबका राइटअप एक ही जैसा होगा, उसमें जो क्राफ्टिंग जिसने अच्छा किया होगा वो एज लेगा. नंबर 2, यहाँ पे जिन लोगों ने भी मुझे लगता है कि पहले से सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया होगा उनको थोड़ा सा एज मिलेगा, या जिन लोगों ने यूपीएससी का पेपर सॉल्व किया होगा उनको भी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, rather than the people those who are simply reading superficially and they have their first attempt. तो कोई तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ दैट स्टैंडर्ड. जहाँ पे आप एट पार यूपीएससी है, या आप उसे 2-3 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन से बेहतर ही है. जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, आईएएस के एग्जाम, उससे बेहतर ही है. कहीं से भी वो बेहतर, और बहुत बेहतर क्वेश्चन, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन. So this is what their orientation has been. What I'm going to do today, मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस का सिर्फ एक डिमांड और अप्रोच डिस्कस करूँगा. I will not discuss the content because in the description you will find a link जहाँ से आप जो इसकी जो सॉल्यूशन है
वो मैं डेवलप कर रहा हूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो इट्स ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक. तो कोई सेंस नहीं है कि हम उसको उसके पूरे के पूरे कंटेंट को डिस्कस करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा ही होगा. तो पूरा जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अप्रोच टू द क्वेश्चन एंड ऑल्सो सम आइडिया अबाउट व्हाट टू डू फर्दर. हम आगे प्रिपरेशन जिन लोगों को भी नेक्स्ट ईयर देना है वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें. So this is what I'm going to do today. Fine. So let's open the question. Fine. तो दो सेक्शंस थे इस बार, ए और बी, 20 मार्कर और 50 मार्कर्स. फाइन. सो विल पिक वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. Explain the major determinants of the ethical action with the suitable example. So it talks about the major determinants. It is already given in the syllabus also with the suitable example. Fine. Now what you have to do is here, अगर determinants देखो तो बहुत सारे determinants होते हैं ethical action के, but then you don't have to write everything. What you need to prioritize something. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास 10 पॉइंट है तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप 10 पॉइंट लिख के आप मार्क्स बहुत गेन नहीं कर सकते. आपको ये समझना पड़ेगा कि इस 10 में से 5 आर इम्पॉर्टेंट और यू कैन से 5 यू कैन प्रायोरिटाइज. वाई? बिकॉज यू विल हैव टू गिव स्पेस फॉर द एक्सप्लेनेशन. यू विल हैव टू आंसर इट विद द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि इनका ही आंसर देना हो तो द डिटर्मिनेंट्स. So what does mean by determinants? Determinants simply means the personal values, situation, socialization, context, etc. that influences the standard of one's principle, or you can say it influences the decision making, whether it is ethical or not. Right? So this is what the general meaning is. Now, when it is talking about the major determinants, so the first determinant in any case is personal belief, individual, or you can say the individual values, because it all starts with you. So in any case, the first point is personal values and belief serve as the internal guide. So broadly you can say in two ways, or you can see everything in the two ways. One is internal, another is external. Internal is the values which you have internalized, imbibed through the socialization throughout the process. ठीक है, आप बच्चे हैं, बड़े होते हैं तो वैल्यूज इनकलकेट करते हैं. वो वैल्यूज बिलीफ फर्स्ट पॉइंट है जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शन को डिसाइड करती है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस. We are social animals. We exist in society. Our life and existence is possible because of the way we are organized in the society. And so every culture has their own standards, principles, practices, beliefs, etc. So even if you disagree with something, then you will find that sometimes cultural belief practices exert its control, its influence. Whether it is related to, you can say, the marriage, whether it is related to the Kha Panchayat's decisions, whether it is related to the gifts and all, bribe, etc. So this is how you can see the social aspect. Third very important aspect is legal framework. Law is important and law ensures minimum morality. तो लॉ एक फैक्टर है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो बहुत सारी सोसाइटी में एबॉर्शन इज़ कम्प्लीटली इलीगल. फॉर एग्जांपल सविता हाला पनवार का केस अगर देखोगे तो आयरलैंड में समझ में आएगा कि वाई एबॉर्शन इज़ completely illegal. But there are some societies where to an extent you can say
It's illegal depending upon the total number of days जहाँ पे law permit करती है abortion. So legality is important. Then one another aspect is basically the role of the role models. Role models. एक society में hero कौन है, role model कौन है, and this is how the things are decided on the line of the ethical leadership, both leadership, role model, etc. For example, any society which celebrates, which leads the success of good role models, obviously their influence they will find in the society. So this is how you have to think about these points. Again, I am saying you, my whole idea is basically to help you to develop approach. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन डाल दे रहा हूँ, वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो. और टाइम टू टाइम हम लोग उड़ीसा पीसीएस के लिए वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड the courses, and we are doing a lot of mentorship session. So there you can interact and we'll discuss. Fine. So similarly, you can talk about the consequences of any action, reward or punishment of any action, social pressure, etc. Fine. So in conclusion, when you say ethical action are shaped by it's a complex interplay of personal, cultural, social, situational factors. So you have to list those factors, you have to explain it, you have to give it example, and then whatever example you give, you discuss some consequences of it. Fine. तभी तो आप बता पाएंगे ना कि ये डिटर्मिनेंट क्यों है. Fine. This is what this question is. Let's move to this. So also this time question paper is you can say is not very simple, in the sense it's a lengthy also, especially for those who are writing for the first time. जिन लोगों ने यूपीएससी दिया हुआ है उनके लिए तो वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने यूपीएससी नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, उसके लिए पेपर लेंदी लग सकती है, क्योंकि 20 मार्कर्स है, 15 मार्कर्स है. In every question they have demanded for, you can say, justification, examples, explanation, analysis, etc., which takes little bit time to think, organize your thought process, examples, etc., and then to continue further. So this is how this paper becomes a little bit tough. It also shows कि आने वाले टाइम में ये पेपर जो है वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा ऐसा देख के ये लग रहा है, क्योंकि वो पेपर तो इवॉल्व कराएंगे ना. ये तो फर्स्ट ईयर है, हर एग्जामिनेशन में ऐसे ही होता है, जनरली पेपर इवॉल्व करते रहती है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उतना ही ट्रू है. फाइन. सो लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन. It says, explain the specific ethical practices in the personal, organizational, and public sphere and that are binding to all the spheres by citing examples of great administrators. Great administrators. Fine. So you have to take, you can say, the example from the personal sphere, organizational sphere of the great administrators. Fine. यहाँ पे great administrator है. Fine. It's not civil servant. ये civil servant नहीं है इसमें से. Fine. जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया हो, एग्जाम्पल्स आप उसके ले सकते हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, इन द कंटेम्प्रेरी टाइम देर आर वेरी, यू कैन से, गुड सिविल सर्वेंट्स, दोज हु डिड वेरी वेल व्हेन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्फेयर, right from, you can say, TN Session to Samit Sharma, Dr. Samit Sharma rather, to you can go till Sardar Patel. So you can talk about that great administrators in that. Fine. पब्लिक स्फेयर में बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने काम किया है पब्लिक स्फेयर में. फॉर एग्जांपल, नेल्सन मंडेला इज ग्रेट नेम इन दैट कैटेगरी, वेयर यू कैन डेमोन्स्ट्रेट हाउ हिज डिसीजंस वेर एथिकल and how it contributed to the life of the people of Africa. Fine. So what I'm trying to say here is, you simply take certain parameters. Fine. क्योंकि ये कह रहा है ना
explain some ethical practices, some specific. तो वो specific ethical practices को आप list कर लो, fine, and then you link to the name. Then it's a little bit easier for you to, you can say, recall the things. For example, integrity, एक specific, फॉर एग्जाम्पल एथिकल प्रैक्टिस हो सकती है, रिस्पेक्ट दूसरा हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी तीसरा हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फाइन. दिस इज हाउ इफ यू लिस्ट एंड देन लिंक, देन इट वुड बी you can say much better for you to write these kind of answers. Let's come to the another question. Next question is, integrity is all inclusive, elaborate on it, mentioning all types of integrity and their constitute are relevant to civil servants. So this question is all about integrity, but this question is talking about the different way to look at the integrity and with a specific reference to working civil servants. हम उसके civil servants के context में ही देखना है, fine. So the first thing first, when we say integrity, it's a fundamental principle that encompasses, you can say, it's a broader term in that sense, you can say. But integrity is basically is the principle which integrates you in the sense that makes you a personality, that makes you a character. So it's not about one or two things. It's basically combination of various aspects, whether it is honesty, virtue, etc. So this is how integrity is seen. But integrity can be seen in the professional life also, in the personal life also, in the social aspect also. So let's take one by one. For example, you can talk about professional integrity. So professional integrity here simply means adhering to the ethical standard and principle in one's professional life. So civil servants are expected to demonstrate professional integrity in all aspects of their work, including decision making, including interaction with the colleagues, public management of public resources, funds, etc. Fine. For example, compliance, for example, confidentiality. These are the part of, you can say, or these are the examples you can give while discussing professional integrity of civil servants. Fine. Then the personal integrity. Personal integrity constitute between, you can say, it's basically simply a consistency between individuals' action and their personal values. In the sense, the way we do our work and the way we value it, means our personal value and the way I take decisions, I work. So there must be a consistency. ऐसा नहीं कि हमारे प्रिंसिपल कुछ है, वैल्यू कुछ है, बोल कुछ और है, कर कुछ और है. So this is how we see the personal integrity. So for example, honesty, accountability, trustworthiness, these are the examples of personal integrity. Then the social integrity. Social integrity, you can say, pertains to responsibility of civil service to contribute positively to the well-being of the society. ये social construct में हम इसको देखेंगे. So this is what, for example, और social integrity को हम कैसे explain कर सकते हैं example के through. Respect for diversity, community engagement, upholding rule of law, etc. So this is how you can talk about mentioning all types of integrity relevant to civil servants. So I'm giving some you can say the thinking line to you. मैं कुछ thinking line आपको दे रहा हूँ कि जिस तरह से हम इस point को कुछ points को देखते हैं और फिर उसी के basis पे हम answer लिखेंगे. This is how we will write answers. Next question. Next question is, normative ethics is universal and perspective ethics is contextual. In this context, explain how formal act as a principle of the latter with suitable instances. Fine. So when we say normative ethics, fine. Normative ethics is simply a framework of the principles. It's about standards.
So normative ethics provides overarching principles. Overarching principles. And normative ethics, you can say, serve as a foundation for पर्सपेक्टिव एथिक्स इन द सेंस एक प्रिंसिपल है और हम फिर किसी भी कंटेक्स्ट में वो प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगी, हम किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, ये प्रिंसिपल हमें सपोर्ट करती है. ये प्रिंसिपल becomes or these principles become the basis to do so. Fine. For example, there are several examples of normative ethics. Utilitarianism, number one. Deontology, virtue ethics. These are the normative ethics. In the sense, it is overarching principles. This provides a framework that guide ethical decision making. For example, utilitarianism is based on the utility of the action, outcome of the action. Deontology talks about the duty. Fine. Virtue talks about the character. So this is how you have to think about the normative. Now, very interesting, if you look at the question, it talks about a very important aspect that, and the perspective ethics is contextual, in the sense that even normative ethics, when applied in the different context, that context you have to visualize. For example, let's take the example that suppose how नॉर्मेटिव एथिक्स और पर्सपेक्टिव एथिक्स को कैसे देखते हैं. जैसे सपोज करो कि देयर इज समवन हु केम टू यू एंड आस्क और रिक्वेस्ट टू गिव ए स्पेस टू हाइड, क्योंकि उसको लगता है कि जो पुलिस है उसके पीछे है एंड वो गलत कारणों से है. आपने उसको स्पेस दे दिया अपने घर पे. अब पुलिस आती है, तो कंटेक्स्ट और पर्सपेक्टिव किस तरह से नॉर्मेटिव एथिक्स सेव करती है. फाइन. Now, if police comes and asks you a question that have you seen this person? Fine. Deontology say don't lie. Why? Because if you lie and everyone start lying, then what will happen? What will happen? But at the same time, you need to understand that whatever normative ethics is, some or other criticism is always there. कोई भी principle, कोई भी ethical theory अपने आप में complete नहीं है. It's a godlike situation. इट्स अ गॉड लाइक सिचुएशन. तो गॉड लाइक सिचुएशन हो जाएगी ना साहब, अपने आप में कंप्लीट है, बियॉन्ड एनी क्रिटिसिज्म, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन. तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है. तो जितने भी नॉर्मेटिव एथिक्स है उसकी सम यू विल फाइंड सम लिमिटेशन और सम क्रिटिसिज्म ओनली इन द कंटेक्स्ट. दिस कंटेक्स्ट यू हैव टू लोकेट. दिस इज व्हाट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज. फाइन. वो एग्जाम्पल्स वगैरह मैं लिख के और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे कैसे. हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, बिकॉज द फर्स्ट ईयर क्वेश्चन हैज एटलीस्ट एस्टेब्लिश्ड वन थिंग दैट इन द कमिंग डेज और द कमिंग ईयर्स द क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ द हायर साइड. ये तो फर्स्ट ईयर में ही इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहाँ पे इन लोगों ने टर्मिनोलॉजी और कीवर्ड्स पे गया ही नहीं है. अगर इसमें भी देखो तो ये आप इसमें नॉर्मेटिव एथिक्स सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस में लिख सकते हो. दैट्स इट. 20 मार्कर है ये. सो रेस्ट 200-250 वर्ड्स जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे उसमें? यू विल एक्सप्लेन इट, यू विल एनालाइज इट, यू विल इलस्ट्रेट इट. दिस इज हाउ यू हैव टू सी इट. एंड सो थोड़ा सा इस पेपर को प्रिपरेशन में टाइम दो. This paper is slow, so don't try to finish in 15 days or 20 days. Rather, if you allow this paper to evolve slowly, then it is always better. So I always say that ethics को जब भी आप पिक करो तो आप किसी और सब्जेक्ट के साथ करो. सिर्फ सोलो कि हम तो 5 डेज में, 10 डेज में और 15 डेज में खत्म करनी, दिस शुड नॉट बी द अप्रोच. ये इस पेपर के लिए ठीक नहीं. तो अब जो भी अपना रूटीन है दूसरे पेपर के लिए उसको फॉलो करो और उसके साथ इसको कैरी कर लो. स्लोली 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 अलाउ दिस पेपर टू इवॉल्व ग्रेजुअली. यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट.
क्योंकि कहीं पे भी ये रेडीमेड आंसर नहीं मिलेंगे इसके, आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे. So that starts with the good understanding and then your ability to connect different things जो करंट अफेयर्स में पढ़ा है आपने या पेपर 1 2 3 में पढ़ा है उसको. So this is how you need to think about that. Right. So let's go to the another question. Another question, question number 3. So this is I will pick. Discuss 10 major aptitude indispensable for a good civil servant with suitable examples. Very easy. Fine. So aptitude simply means suitability for a job. अगर हम इसको इस पेपर को हटा के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बात करें, एप्टीट्यूड सिंपली मीन सुटेबिलिटी फॉर अ जॉब, बट स्पेशल स्किल सेट्स इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है, फाइन, अदर प्रोफेशंस के लिए अलग है, बट देन इन सिविल सर्विसेज इट्स बेसिकली ए सिविल सर्विस. It's more about a generalist approach rather than a particular or you can say the specific like the engineer, doctors, etc. And this is in that context you have to see the aptitude. Fine. So when we say aptitude, the first thing first has to be the leadership ability. Leadership ability in the sense you will have the responsibility to drive your department, your district, fine, your colleagues, etc. Number 2, problem solving abilities, because you have to take decisions, you have to solve problems, whether it is related to the protest, whether it is related to the you can say the policy feedback, whether it is related to interaction with your minister or whatever it is. Fine. So then ethical integrity, adaptability and flexibility is very very important. So there are you can say 10 15 20 lists it can be. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन इन दैट वे. अगर पहले से आप देखो जितने क्वेश्चंस हैं तो उसमें शायद मुझे लगता है अब तक ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है. तो इस तरह से सिर्फ आप लिस्ट करो उसको एंड देन यू मस्ट राइट वाई. अदरवाइज इट विल बिकम ए सिंपल कंपाइलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कि आपने सिर्फ कुछ वैल्यूज को आप लिस्ट करते जा रहे हो. डोंट डू इट. ऑलवेज डू. फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू से इंटीग्रिटी, वाई इट इज. If you say leadership skill, why it is? Why it is? If you say honesty and integrity, why? Fine. So this is what it is. It's very easy, very very easy question. Next question. Look at this. Explain how a proper and balanced blend of attitude and aptitude can make one successful administrator. Fine. Interestingly, if you look at this paper has touched almost all the aspects of the entire paper. करीब करीब इसने सारे यूनिट को टच किया क्योंकि हर क्वेश्चन में वो एक ऑप्शन दे रहे हैं ना, अल्टरनेट और दिस और दैट. सो इन ए सेंस दैट इट हैज टच्ड, बट इट विल बी you can say beneficial or helpful for the candidates only those who are very well prepared and at least cover the syllabus very well. तभी तो आप अल्टरनेट पिक कर पाओगे ना कि हम ये नहीं तो ये लिख लेते हैं. अदरवाइज तो अल्टरनेट का कोई सेंस ही नहीं है अगर सिलेबस बहुत अच्छे से कवर्ड नहीं है तो. फाइन. तो दिस इज हाउ इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे. India has a diverse culture and people and many live under the terrible condition. To deal with their situation and progress, sketch out a model of empathetic and compassionate governance. But this question is basically based on the idea of ethics in governance. This question is based on citizen-centric administration, the idea of citizen-centric administration. So this is what this question is about. Let me open it. So you will have to find empathetic and compassionate governance. Sketch out a model. It talks about the model governance. So
दिस स्टार्ट्स विद द इंक्लूसिव पॉलिसीज इटसेल्फ, कि जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, क्योंकि पॉलिसी ही एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और अपना काम करती है, और उसी के बेसिस पे बहुत सारे स्कीम्स, डिसीजंस एट्सेट्रास लिए जाते हैं, स्कीम्स बनते हैं, लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं. So the very important is basically that when any policy is crafted, any policy is developed, how inclusive it is, how it takes care of, you can say, the diverse culture, demand of the diverse culture, people. फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल्स देखो तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स बहुत हैं. फॉर एग्जांपल एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट गवर्नेंस का एग्जांपल है पीएम आवास योजना. दैट इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल. स्वच्छता मिशन इज द एग्जांपल. फाइन. बेटी बचाओ बेटी आंदोलन इज वन एग्जांपल ऑफ वन. So this is how you can think of certain examples. There are several examples of this nature in the, you can say, the by initiatives taken by the Odisha government itself, and that too particularly for the tribal people, fine, tribal women. So there you can take that kind of examples and then list out those examples, and then what purpose it serves. Evaluate it with the ground realities. That's it. This is what the demand of this question is. बट उड़ीसा का ये क्वेश्चन उड़ीसा का नहीं है, इसलिए उड़ीसा सिर्फ एक एस्पेक्ट हो सकता है, उसका एक एस्पेक्ट हो सकता है. अब यू कैन नॉट राइट इन एंड अराउंड ऑल द स्कीम्स. वन स्कीम और टू स्कीम्स यू कैन टॉक अबाउट. सो यू विल हैव टू टॉक इन द लार्जर कंटेक्स्ट, बिकॉज इट सेज इंडिया हैज द डाइवर्स कल्चर एंड पीपल इन मेनी टेरिबल कंडीशन. सो इट्स बेसिकली अ क्वेश्चन which is asking at the national level. तो अगर आप एग्जाम्पल्स देते हुए, क्योंकि आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो स्टेट पीसीएस के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास स्टेट को लेके होते हैं, बट देन यू कैन टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज व्हाई आई हैव गिवन यू 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ दैट नेचर. फाइन. So another question this year, if you look at from the leaders, reformers, thinkers, there is only one question. One question. In UPSC, you will find rather more questions. More questions. So they have asked, you can say simply one question about Gopabandhu Das ji, and as here it is itself written, he is popularly known as the Utkal Mani. So if you know, you can say, the biographical sketch, then it's easily you can take some information from there. But if you don't know, then what to do? Because in UPSC also there are several questions. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप स्पेशली अबाउट द थिंकर्स एंड लीडर्स कि आपने पढ़ाई नहीं है, क्योंकि आप जनरली जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो यू ऑलवेज रिलाई ऑन वेरी थिन गाइड और एनीथिंग एल्स विच इज़ वेरी इजी टू कंज्यूम. और अगर थिंकर को देखो तो वो 50, 60, 70 थिंकर लीडर रिफॉर्मर मिल के हो जाते हैं. देन व्हाट टू डू अबाउट दैट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अराउंड दोज थिंग्स. फाइन. So in the Gopabandhu the case, he is a prominent figure in the Indian history, known for his multifaceted contribution as a social reformist, writer, philanthropist. He worked a lot, you can say, for the education. He was a freedom fighter. So in that way, you have to think. So you can simply, you can say, fix your answer in and around 1 or 2 areas. फॉर एग्जाम्पल सोशल जस्टिस और एजुकेशन के आसपास आप लेके उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट हिज रोल व्हेन ही वाज यू कैन से द पार्ट ऑफ द कांग्रेस कमिटी, and how he contributed to the
freedom struggle, etc. But question is largely about, you can say, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया, मॉरलिटी, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी विद द इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन. सो इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपेशली अगर आप देखें तो इफ़ यू टेक इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन, सोशल जस्टिस एट्सेट्रा, देन इट वुड बी बेटर रादर देन द पॉलिटिकल, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल है वो इसमें एसच उन लोगों ने उसमें वो गए नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है उस तरह के. सो दिस इज व्हाट इट इज. क्वेश्चन नंबर 5. If you look at question number 5, probably I will say this is the most difficult one. जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके उसमें अगर सबसे डिफिकल्ट कहें या हाईली कंसेप्चुअल कहो, हाईली कंसेप्चुअल, डिफिकल्ट से अच्छा रहेगा हाईली कंसेप्चुअल कहो. सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज हाईली कंसेप्चुअल. इफ यू आर नॉट वेरी कंसेप्चुअली वेरी साउंड, even in the UPSC these kind of they have not gone with that depth. यूपीएससी में भी इतने डेप्थ के साथ क्वेश्चन उन्होंने कभी नहीं पूछा है. एक दो क्वेश्चन होते हैं बट दिस इज हाईली कंसेप्चुअल, हाईएस्ट ऑर्डर यू कैन से. अगर आपने कांट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, डिएंटोलॉजी नहीं पढ़ी है आपने, डिएंटोलॉजी का एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में भी स्पेशली यू कैन से विथ रेफरेंस टू द सिविल सर्वेंट्स, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, then it's a little bit difficult to you can say answer it. So let's understand this question first. It says Kant has given 3 formulations of the categorical imperative as the following. Number 1, act as so that maximum of your action should become a universal law. Treat humanity in every case as an end in themselves and never as means only. Every rational person is both subject and ruler of the kingdom of the ends X. You can say explicate these 3 contexts of civil servants. So number 1, अगर ethical theories को आप देखें तो ethical theories में deontology is very important, and whenever we talk about the deontology, Kant comes the first. There are other thinkers also who contributed, you can say, in the deontology. But here the question is about the Kant. Kant basically talks about the basis of decision making क्या होनी चाहिए, basis of ethical action decide करने की क्या होनी चाहिए. So he talks about the duty. But when he talks about the duty and he explains everything, his principles, or you can say the idea, is popularly known as categorical imperative. कैटेगोरिकल इंपरेटिव में वो बात करते हैं कि साहब पहला कि आप जब भी कोई काम करो तो ये सोच के करो कि क्या ये यूनिवर्सल लॉ बन सकती है. इफ एवरीवन डज द सेम व्हाट विल हैपन, नंबर 1. नंबर 2, इट सेज ट्रीट ह्यूमैनिटी इन एवरी केस एज द इन देमसेल्फ, नेवर एज मीन्स. सो his idea is basically to treat everyone as end, and that is popularly known as principle of ends जो उन्होंने दिया है. तो वो कहती है कि साहब डोंट यूज पर्सन, rather than treat everyone as in themselves. And third, it says every rational person is both subject and ruler of kingdom. तो थर्ड एस्पेक्ट जो है कांट का, तो वो ये कहता है कि साहब हर इंडिविजुअल रैशनल बीइंग है, फाइन, दे हैव द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एडहेयर द मॉरल प्रिंसिपल्स. हम हो, आप हो, सिविल सर्वेंट हो, सबको समझ में आता है what is right and wrong, and to how to adhere it, they also know it, because we are rational creature, or you can say the rational beings. This is what the does it mean by the third point. So these are the 3 things what Kant talks about. Kant और भी बातें करते हैं कैटेगोरी के इम्परेटिव में, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, the question which has been given here, it talks about these 3 things. Fine. So this question basically talks about the Kant's formulation of the categorical imperative, provide you can say valuable ethical guidelines for civil servant, emphasizing importance of universality, कि एक सिविल सर्वेंट जब डिसीजन ले तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी
पे बेस्ड कैसे होगा. नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, बिकॉज सेकंड इज ऑल अबाउट दिस रिस्पेक्ट फॉर यू कैन से ह्यूमन डिग्निटी. And third is creation of a moral community governed by the shared ethical principles. सभी रेशनल बीइंग हैं, सभी को पता है what is right and how to adhere it. So this is what the basic question is. Now again I am saying you, if you are not very conceptually very sound, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा. इफ़ यू आर नॉट कॉन्सेप्चुअली साउंड, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन है क्या, क्या कहना चाहते हैं. बिकॉज लार्जली व्हेन यू टॉक अबाउट द मॉरल थिंकर्स और स्टूडेंट्स यूज टू रीड इन अ वे दैट दे जनरली गो थ्रू सुपरफिशियली. ये सुपरफिशियली एक तरह से उसको हमने देख लिया. बट दिस डिमांड्स अ वेरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. So another question says, with the suitable example, illustrate both positive and negative sides of the consequentialist ethics, if exclusively followed for the governance. Right? Another question, though it's very easy, बहुत ही आसान सवाल है ये. So consequentialist ethics is also known as teleological ethics. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ है कि when the moral actions are decided, or you can say the ethical actions are decided on the basis of its outcome, consequences. That's why it is consequentialist ethics. Fine. So positive side is basically that it focus on the results, outcome. Fine. Flexibility है, adaptability है, pragmatism है. It talks about efficiency and outcome. So it's a positive. But the negative side is basically many a time it talks about the short term focus. For example, जैसे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बननी है साहब, और कुछ लोगों को डिस्प्लेस करना है, तो नो इशू फॉर दैट. अगर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है तो नो इशू फॉर दैट. अगर वो यू कैन से 10,000 20,000 30,000 मेगावाट प्रोड्यूस करेगी और एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी जाती है, डेवलपमेंट में काम आती है, तो दिस इज़ हाउ इट कंपेयर्स कि अब थोड़ा सा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, कोई बात नहीं, डिफॉरेस्टेशन कर दो. तो एक शॉर्ट टर्म है, यू कैन से फाइन. एथिकल डिलेमा और ट्रेड ऑफ है इसमें. फॉर एग्जांपल हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट करें या नहीं करें, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, करें या नहीं करें. And the very important aspect in the case is basically when you look at the individual and the monetary interest, जो लेस इन नंबर्स हैं, उसके इंटरेस्ट को ये जनरली यू कैन से लेस प्रायोरिटी पे रखती है या इग्नोर करती है. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए. सेक्शन ए की जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो कॉन्सेप्ट है, और उससे ज़्यादा है आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए वेयर यू कैन राइट, बिकॉज दीज आर 20 यू कैन राइट इन डिटेल, बिकॉज दीज आर 20 मार्कर्स. तो 20 मार्कर्स जब भी होंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि साहब हम उतना दूर ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज. लेट्स कम टू द ग्रुप, यू कैन से द बी क्वेश्चन वेयर इट इज लार्जली ऑफ द 15 marker. So discuss one by one very quickly. It says discuss Aristotle notion of virtue ethics and how it is conducive to private organization and public transactions. Fine. So if you look at the moral theories, moral theories are basically categorized in the broader three categories. Number 1, the consequentialist. Number 2, non-consequentialist. And third is agent-based. Agent-based is basically when you are the basis of the you can say the whole basis of understanding the moral theory, etc. And so in that context, agent-based virtue becomes very important. In the sense, character becomes the central of everything. And this is what Aristotle talks about. Aristotle का जो virtue ethics है, वो बेसिकली ये कहता है कि साहब अवॉइड द एक्सट्रीम. दैट इज़ व्हाट ही टॉक्स अबाउट द वर्च्यू. एडोमिनिया उनका कहने का यही मतलब था, एडोमिनिया को. बट हम लोग उतने थियोरेटिकल में नहीं जाएंगे. देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग. सिर्फ हमें ये समझाना है कि एरिस्टोटल का जो नोशन ऑफ वर्च्यू है वो है क्या. अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम व्हाट डज मीन बाय इट.
and then you can take the examples from private transactions. प्राइवेट ट्रांजेक्शन में इंडिविजुअल में आप ऑनेस्टी लॉयल्टी फ्रेंडशिप का एग्जांपल आप ले सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन टॉक अबाउट द यू कैन से द लीडरशिप एट्सेट्रा. एम्प्लॉय, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, इसके एग्जांपल्स को लेके आप ऑर्गेनाइजेशन में का एग्जांपल्स दे सकते हैं. एंड थर्ड इज पब्लिक ट्रांजेक्शन्स. सो देयर यू कैन टॉक अबाउट द वेलफेयर, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एट्सेट्रा. तो इस तरह से आप एग्जांपल्स को पिक करके यू कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ virtue and giving prominence to character in decision making is linked to private, organizational and public transactions in governance, in organizations, whether it is business or somewhere else, and in private. So this is what this question is. ये question का demand यही है. Then the next question is discuss the ethical dimension associated with the utilization of the public fund. Easy question है, काफी easy question है. So ethical dimension इसमें है transparency and accountability, fine, fairness and equity, avoidance of the conflict of interest, efficiency and effectiveness in the sense कि जितने भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसका आउटकम क्या है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. उस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए जो पब्लिक फंड जा रही है साहब, उसमें जो फंड लगे हैं, उसके बाद सवाल ये उठता है कि साहब कि कितने लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर एलिवेट किया गया है, क्या स्टैंडर्ड में चेंजेस हुए हैं, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की है. सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन नंबर 8. Fine. This question is easy. Fine, quite easy. Why are transparency and right to information adopted for the administration? It's a quite easy. Number 1 for accountability. Number 2 for democratic governance. Number 3 for prevention of corruption. Number 4 for trust and public confidence. क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ही पब्लिक कॉन्फिडेंस आएगा. इन्फॉर्म डिसीजंस हो सकते हैं, पब्लिक ले सकती है. और ये एंड लास्ट इज एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज सिटीजन्स नो व्हाट इज द बेसिस ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट एंड दे कैन टेक द यू कैन से द वेरी वेल इन्फॉर्म डिसीजंस. सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक. क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 says it is often found that some of the construction of the public places like bridges, flyovers break down at the stage of the half construction or immediate completion. These are obviously due to the corruption. In this context, analyze the lack of moral integrity, improper attitude and constraints that led to corruption and simultaneously suggest the preventive steps involving accountability and transparency. बहुत आसान क्वेश्चन है. This is you can say it's based on our contemporary experiences because of the corruption. The quality of the infrastructure is often compromised and that leads to you can say the loss of human lives also, loss of financial also, and ultimately loss of the credibility of the institution, government, so working, etc. So these things are important to talk about this. Fine. So why it is happening so? Number 1, lack of moral integrity, systematic constraints in the sense within the construction industry, regulatory framework. So these kind of things you have to talk about. What are the preventive measures? So enhanced oversight is very, very important. Monitoring is important. Supervision is important. Legal framework is already there, but implementation of those you can say the legality is very, very important. And ultimately the promotion of the ethical standard within the organization and improving the overall work culture is important to overcome these kind of things. So this is what the demand of the question is.
Question number 10. Explain the moral obligation based on which corporate responsibility is fixed. Fine. This is based on the idea of the good governance first. So if you know, you can say the idea of the good governance in the contemporary times, probably then you can you can explain about the corporate social responsibility in a much better way. Because when we talk about you can say the good governance, it is not the sole responsibility of the government. Rather, it is the responsibility of the government, civil society, and the corporations, market, etc. Fine. There comes their responsibility, social responsibility. Fine. तो अगर आप broader context में concept को समझ पा रहे हो तो आंसर में क्वालिटी इंप्रूव करेगी. अदरवाइज कुछ कीवर्ड्स के आसपास आपके आंसर हो जाएंगे. तो इफ समवन इज गेटिंग 30%, probably if you are conceptually sound, you may get 45% or even 50% or even much more than that. Fine. This is how this paper brings the variation in the marks, and mostly we'll find the selections are based on these papers because variation of the marks. क्योंकि बाकी पेपर में सिर्फ इंफॉर्मेशन ड्रिवन है तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो भी कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हैं वो उसके आसपास ही लिखेंगे उसको. तो दैट is not a big problem. Fine. So coming back to the point, explain the moral obligation based on which corporate sustainability is fixed. Number one, it talks about you can say ethical treatment of the stakeholders, not shareholders. I'm talking about stakeholders, be it society, individual, etc. Fine. And then the environmental stewardship is very, very important. The transparency, accountability, community engagement, and philanthropy is you can say the very basic philosophy of which drives the corporate social responsibility. Right? So this is what it is. So let's come to the question number 12. Sometimes due to empathy and humanistic attitude and dedication to public service, an administrator is likely to think to bend the rules and become lenient a little, which could legally help a person. However, to be humanistic, adopting empathy and a dedication to the public interest are moral, but bending the rules and being lenient is illegal. Fine. Is illegal. Yes, it happens. There are several cases. So this is a very fine example of question which is based on your observation. ये रेडीमेड आपको कहीं पे भी आंसर इसके नहीं मिलेंगे. आपको एक थिंकिंग से ही डेवलप होगी और अगर आपके सेल्फ स्टडी में वो अप्रोच वो माइंडसेट है तब तो आप उसको कल्टिवेट कर सकते हो. अदरवाइज ये कल्टिवेट नहीं होगा. इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ some area has been you can say occupied illegally by the poor people. Fine. And in the cold winter you have to you can say you have been ordered to कि इसको हटाओ साहब. एंड देन यू थिंक दैट कि नहीं साहब इसको अभी कम से कम विंटर तक तो डालते हैं. नाउ इट्स ऑर्डर. अब वो गरीब हैं नहीं हैं क्या हैं, इट्स अनदर आस्पेक्ट. लेकिन इंक्रोचमेंट इज इलीगल. illegally if you are occupying any government's land is illegal. That's it, that's simple. बट एम्पैथी आ जाती है साहब. यहाँ पे एक एम्पैथी एक ऑफिसर की आ जाती है कि साहब को विंटर है, इसमें अभी डिस्प्लेस हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे ये. तो दिस काइंड ऑफ डिलेमा हैपेंस. फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ वेरी फेमस केस ऑफ मेजर गोगोई in Assam when he had to save his team members. And so he tied up one person in the front of his jeep and he started driving. And so when he was, we can say, driving and using a person as a human shield, it's illegal. It's illegal. Fine. But then to save the whole team member, he took the decision. Now, if you talk it from the human right of an individual, it's against the human right. But if you talk about a decision which is based on the context, probably he took the pragmatic decision to save his team members. Fine. So there are several examples of these kind of things where you have to see everything on the basis of the context, situation.
And in this situation you have to explain everything through those situation. जैसे 2 का एग्जाम्पल दिया, ऐसे तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. इसलिए मैंने कहा कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आप रेडीमेड किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको. In any case, you will have to go for better discussion, understanding, discussion with the mentors. टेस्ट वगैरह लिख रहे हैं, फैकल्टी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है. पर जैसे इस बार हम लोगों ने टेस्ट किए थे, टेस्ट सीरीज उड़ीसा पीसीएस के लिए, और लगातार हम लोग कर रहे हैं. इसमें से बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज भी कर रहे हैं. और डेफिनेटली आई कैन से with firm belief that those who wrote all the tests, they will find themselves little bit in a comfortable position to complete the paper. Then one question is, you can say, evaluate the reformative administration of Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of the independent India, highlighting the moral integrity, attitude, aptitude. This is a very straightforward question, very straightforward question. If you have read about the Sardar Patel, then definitely you will know. So I will explain it. I don't want to go into the content of it. I will explain it in the answer, and you will get it. So let me come to the next question. Protocol and Code of Conduct. Question number 14. Protocol and Code of Conduct are the perspective. However, most are these based upon some cultural moral values, explicit these values, norms, appropriate instances. Fine. See, when government works, it works with different departments. It works with, you can say, different reasons. There is a set of people, work culture, attitude, etc. So it brings a lot of subjectivity. Governance cannot be based on the subjectivity. It has to be objective. Then only decisions will be objective. A continuity in the decisions are possible. That's why protocol, code of conduct, etc. are important, because it brings uniformity. It brings a structure in decision making. It brings a structure in working, etc. Fine. And now when we are talking about the code of conduct, protocol, etc., it is based on the cultural and moral values and norms. Obviously, it is for example, cultural diversity, you can talk about professionalism, accountability, you can talk about fairness and justice, you can talk about. So always code of conduct, you will find that reflect the culture and moral values. For example, if you take the context of India, taking gift by the civil servants are not allowed. It's a restriction कि आप इतने से ऊपर के गिफ्ट नहीं ले सकते आप सब. अगर किसी ने दिया भी है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको. This is based on our culture, but this is not true in every country. तो कोड ऑफ कंडक्ट में एक एग्जाम्पल है साहब. अगर अपने कंट्री में आप इस इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्राइब. While there are many countries, European countries, where it's okay if someone is giving you costly gifts, wine, XYZ. तो बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे वेलकम है, यहाँ पे नहीं है साहब. यहाँ तो एक तो ले नहीं सकते हैं. अगर किसी तरह से वो आ भी गए तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी उसमें से. So this is how you have to think that or understand the demand of the question. Question number 15. Question number 15. How can subordinate district level civil servant maintain impartiality and dutifulness by adopting perfect attitude and aptitude while working with the hostile political and administrative superordinates, and explain with the suitable example with the example of situations. Very easy question. Very easy question. So perfect attitude will be professionalism, commitment to duty, empathy, strategic thinking, etc. These are the you can say points around which you can write your answer. Fine.
Last question in group B, that is 15 marker. And again, this question is little bit easy, you can say. The administration, politics and public life were expected to be satisfying in the post-independent India. However, the situation is worsening in some state, and the moral and attitudinal explanation thereof, how the situation will improve. Very, very easy question. Fine. So there are several points you can write why it is happening, or you can talk about the several factors. For example, corruption and lack of integrity is the first. Nepotism and you can say chronism is the point. Political polarization, divisiveness, lack of accountability and transparency, caste, communalism, etc. These are the points around which you can write your answer. Fine. So this is what this question is, or you can say the discussion is all about. My whole intent was basically to discuss that how to understand the demand of the question. I was not trying to answer all the questions, because in any case I'm going you to give in the written format. It is going to be very well explained. So the whole idea was basically to help you to understand that how to see it, how to see the demand of the questions. You can say questions are very contemporary, questions are highly conceptual. Some questions are you can say much beyond the standard of what you call it, beyond the standard of the UPSC. So these are the things I will suggest you to go with a long-term plan. बहुत कम समय में या सिर्फ बहुत superficially मत पढ़ो. One thing I can tell you, that this paper will decide this year's selection. Just wait and watch. Right? This is what. Rest time to time, we are doing a lot of discussions, mentorship related to the Odisha PCS itself, running courses also. So there we will keep in touch with you, we'll interact and we'll help you to do your preparation. Thank you. Thank you very much.